नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगनदीप कौर और मैं लेके आई हूँ आपके लिए 26 एपिसोड ऑफ मोर देन माई एक्सटीरियर लव thyself, जहाँ हम बात करते हैं बॉडी पॉजिटिविटी की, बात करते हैं बॉडी को सेलिब्रेट करने की। ये मोर देन माई एक्सटीरियर सिर्फ वर्ड्स नहीं है, इट्स अ फीलिंग ऑफ ओवरकमिंग योर इनसिक्योरिटीज विद योर बॉडी। इट्स सेलिब्रेटिंग हु यू आर एज अ पर्सन एंड नॉट योर एक्सटीरियर। आज मेरे साथ इसी फीलिंग को आगे लेके चलते हुए हैं शबर फजल अहमद मदिया, जो एक एक्स होटलियर हैं, प्लस साइज मेल मॉडल हैं, जो प्रिंट और रैप में अपना जलवा दिखा रहे हैं। 50 प्लस ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं, बॉडी पॉजिटिविटी इन्फ्लुएंसर हैं और सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं। आज हम बात करेंगे उनकी जर्नी की कि कहाँ कैसे एक मिडिल क्लास डोंगरी का लड़का मुंबई में एक प्लस साइज मॉडल बना और कैसे वो इसको आगे लेके जा रहे हैं। ही लव्स फैशन, ही लव्स फूड एंड ही लव्स होटल्स। सो बहुत डाइवर्स पर्सनालिटी हैं और आज हम बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें जानने वाले हैं। सो वेलकम टू द शो शबर। Thank you, Gagan. Thank you very much. Okay, the first time we got connected through Instagram, I started watching your profile. और एक बड़ी मज़ेदार मिथ जो यूजुअली प्लस साइज़ लोगों के बारे में होती है कि बहुत लेज़ी होते हैं। इनको मतलब मोटे हैं तो ठीक है, मॉडलिंग का आजकल ट्रेंड बदल रहा है तो ये लोग मॉडलिंग में भी आ रहे हैं, लेकिन आपके पीछे मुझे ऐसा नहीं लगा। यू आर समवन, even being a plus size person, you're very health conscious, you take care of your health, you like promote कि exercise कितना ज़रूरी है, nutrition कितना ज़रूरी है। तो ये मिथ को कैसे बस्ट कर रहे हो? और क्योंकि लोग हमेशा पूछते भी हैं ये चीज़ें, तो how is it going there? So, a lot of people think, when somebody believes in body positivity, we are promoting obesity or we are promoting people for unhealthy lifestyles. But unfortunately, that's not the case. When we say body positivity, the whole intent is to obviously be positive about somebody else, where we do not judge somebody. And when it comes to embracing your own self, but at the same time, when it comes to fitness, we do not promote unhealthy lifestyle. We do not promote obesity. We do not promote all of that. We want people obviously to take care of themselves. Obviously, when they know, for example, somebody like me, if I have a goal of fitness, I should pursue that, be it weight training, be it combat sports and things like that. So it is very important for an individual to obviously, go to workout. But it depends from people to people, right? Some people want gym as a workout. Some people like yoga. Some people like boxing for that matter. So whatever people like, they should involve themselves in fitness. So that's the whole thing. या क्योंकि हमारे यहाँ परसेप्शन ये है कि अगर जिम जा रहे हैं तो सिर्फ पतले होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम सेहतमंद रहने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ज़रूर रखें। कि कहते हैं शबर, यू कम फ्रॉम डोंगरी विच इज़ अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड फ्रॉम मुंबई। Correct. तो वहाँ से कैसे होटलर बनने का सोचा और उसके बाद कैसे प्लस साइज मॉडलिंग में आए? I was a hotelier. All right. So when I started my hotel management graduate degree, and when I completed that, I got into a 5-star hotel. I always wanted to become a model since I was 17 years old. All right. Okay. But if you look at me right now, I look the same even 8 or 9 years ago. All right. So basically, I was a fat child ever since I was born, like healthy, I would say. And I always wanted to be part of the fashion industry. Having said that, when I was in my college, Gagan, you won't believe I did not do any fashion shows. Because a lot of people at that point in time, my teachers and all of them, they thought that, arey, fashion mein we want somebody who's thin. Okay, Shabbar, you're fat. We can't do that. We want all of that glamour. ये अभी पिछले 5-6 सालों में जो चेंज आया Correct. है, वो उससे पहले इंडस्ट्री में इतने चांसेस ही नहीं थे। पीपल लाइक व्हेन इट कम टू प्लस साइज, यू विल ओनली सी कॉमेडियंस, इवन एंड फैशन में तो कहीं होता था, एक्टिंग में भी अगर होते थे तो उनको मोस्टली कॉमेडी के रोल्स मिलते थे। सही बात है. And so I always wanted to become a model, but I knew that there was a concept in UK about plus size modeling. Unfortunately, at that point in time, I didn't know that something like that existed in India as well. Okay. So I'm talking about the year 2017. Okay. So that was a place. So I was working for a 5-star hotel in South Mumbai, and I got to know that there were auditions happening in that hotel itself. So I called it luck, and I got to know कि अरे वाह, यहाँ पे मतलब in this banquet hall there are auditions happening for plus size fashion models. And I reached there on 37th floor. I still remember the floor. And I told them that, I'm very keen to become a model. Is there something? How do I register and things like that? Unfortunately, that time they told me that they've already
selected people and auditions are done. I was late, simple and sweet. And then I took the number of that guy who's handling the brand that time, and then I told him, okay, can I try that next year? Are you guys also auditioning next year? And I remember they were auditioning for Lakme Fashion Week. And that's how I kept in touch with him. And the year after that, I called him, and then he gave me audition dates and things like that. And that's where I was there. Okay. So my first audition technically was there in the same hotel. Again, I again call it destiny, all right? And there were about 350 people all across from India. And luckily, I was the one who was selected, along with other, I think, 8 or 9 male models. And we had a good fashion show. Narendra Kumar was a designer, and I worked for a brand called All Plus Size. All right, in Lakme great. Fashion Week. तो इससे ये ज़रूर सीखने को मिला है कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है और उस समय आपको लग रहा है कि यार कभी बात नहीं बनी, उन लोगों के कॉन्टैक्ट्स और नंबर्स रखिए, रिश्ते बनाइए. हम लोग यूजुअली लोगों से काम लेने की ही वो करते हैं. आप क्या दे सकते हैं ये देखिए. उस एक साल में जैसे यू केप्ट ऑन परस्यूडिंग दैट पर्सन, दैट शोड हिम योर इंटरेस्ट कि आप सीरियस हैं. ये नहीं कि बस ठीक है, अरे उस दिन नहीं हुआ. यू हैड दैट चॉइस कि अरे निकल गया मेरे हाथ से मौका, एंड यू मे नॉट हैव नेवर लुक्ड बैक. पर आपने उसको परस्यू किया कि नहीं, मेरे पास अगर ये चल कर आया है, जस्ट द वे हम डेस्टिनी दोनों तरीके से देखते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव. अगर नेगेटिव होता है अरे अब निकल गया, पता नहीं अगले साल होगा नहीं होगा, कौन एक साल वेट करेगा, और हम और चीज़ों में लग जाते हैं. और एक होता है पॉजिटिवली उसके लिए वेट करना. जो काम मैं कर रहा हूँ वो तो मैं करता रहूँ, लेकिन हाँ मैं ये बचपन से करना चाहता हूँ, अब मुझे मौका मिला है तो मैं एक साल का इंतज़ार तो कर सकता हूँ. सो दैट्स व्हाट यू डिड, व्हिच वाज रियली ब्यूटीफुल. नॉट गिविंग अप ऑन योर ड्रीम. वेट. तो जस्ट लास्ट वीक आई टोल्ड यू कि I also participated in a plus size modeling pageant. So got an opportunity to be mentored by Rita Gungawani ma'am. She's a Lovely. pageant coach. तो उन्होंने एक स्टोरी बताई थी almonds and peanuts की, कि एक लड़का होता है, भगवान में बहुत मानता होता है, और वो भगवान से बार बार ना पीनट्स मांगता. बहुत मेहनती होता है कि भगवान मैं इतनी मेहनत करता हूँ, सबके साथ इतना अच्छा हूँ, तो मुझे पीनट्स चाहिए. अब भगवान ने उसके लिए कुछ बहुत अच्छा सोचा होता है, लेकिन वो लड़का इम्पेशेंट हो जाता है. भगवान ने सोचा होता है मैं इसको बादाम दूंगा, आलमंड्स दूंगा, लेकिन वो भगवान को बोलता रहता है मुझे पीनट्स नहीं दे सकते, पीनट्स नहीं दे सकते. तो भगवान उसको अल्टीमेटली परेशान होकर पीनट्स दे देते हैं, एंड वो आलमंड्स उसकी किस्मत में नहीं आते. तो उस कहानी का मकसद और शब्बर की पेशेंस को मैं जोड़ रही हूँ कि अगर आप पेशेंस रखें तो भगवान ने जो एलिमेंट्स आपके लिए रखे हैं वो आपकी किस्मत में आएंगे. कभी कभी सब्र करना बहुत अच्छा होता है, सब्र का फल मीठा होता है, ऐसे ही नहीं कहते. हमें लगता है कि मौके जा रहे हैं या हमारा अच्छा नहीं हो रहा, बट ही इज़ रियली राइटिंग समथिंग गुड फॉर यू, सो कीप फेथ. Yeah, absolutely. And Gagan, you'll be surprised. That was my first professional ramp walk of my life. Not just professional. That was, I think, the second time I had walked a runway in my life. First, I remember I participated in one of the hotel fashion shows. So when I was there, it was like a surreal experience because somebody like me had never walked the ramp before, right? I can relate I had to to somehow that. get the confidence and just walk the ramp. I can totally relate because I've done something similar last week, and I know that it's so surreal. Like you've only seen these things. अरे ये तो हम और लोगों को करते देखते थे, या ये तो बहुत like you get that celeb type feeling. Exactly. You started doing something, you started persuading something, और ये पता होता है कि अभी शुरुआत है, आगे लंबा रास्ता है. तो वहाँ से फिर कैसे मतलब ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट वॉक के बाद यू स्टार्ट गेटिंग चांसेस. वो भी अपनी मेहनत होती है कि आप कैसे इंडस्ट्री में रीच आउट करते हैं. तो पॉडकास्ट का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम स्टोरी तो आपकी श्योर बताना चाहते हैं, लेकिन उससे और लोग जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनको किस तरीके का एटीट्यूड रखना चाहिए और किस तरीके से वो रीच आउट कर सकते हैं, ये समझना भी मैं चाहूँगी. So, are you talking about people who just want to join, or they have joined and they want more work? Like that, these are two both different the things. जैसे अगर कोई न्यू भी है, दे जस्ट स्टार्टिंग आउट इन इंडस्ट्री, या किसी ने एक दो काम कर लिए हैं, दे गॉट सम एक्सपीरियंस, बट उनको उस तरीके का ब्रेक नहीं मिल रहा, तो हाउ डू दे अप्रोच द ब्रांड्स, हाउ डू दे गेट स्टार्टेड? So I'll tell you, remaining consistent in this industry is as difficult as joining new.
So a model who's just joined, or and the model who's struggling and is willing to join, both of them would still have equal struggles. And what you have to do is as a model. So when I started, I remember after I did LFW, I was thinking to myself, and I told myself, "Arey yaar, modeling to ho gayi. What next? Can I get more work?" You know, you start getting anxious Sure about a about lot it. of things. You Yes. start getting conscious about a lot of things, and somehow, you know, that sort of anxiety leads to a lot of thoughts. We also start ओवर thinking थिंकिंग शुरू हो exactly जाती कि future में अरे ऐसे तो नहीं लोग बोलेंगे अच्छा इसने एक runway कर लिया, now he'll not be a model. Will I get more job? Will I get more work? So बिल्कुल बिल्कुल what I did was, you know, I started building connects, and to be very honest, I think I was lucky. Like after LFW, I got one or two opportunities samne se, and I accepted that. And after I accepted that, those were, I think, for e-commerce shoots, and one was for the campaign. And in this industry, because you know your work is like largely published across India, a lot of other brands also get to see you. So it's also very important for you to give your best in whatever shoot that you do, because if you just do that for the sake of money, and if you do not give your best, and then you do not look your best in the photos which have come out, eventually, you know, other brands won't like it and they won't approach it. So in my case, I started getting work samne se. So once I got that, when I say samne se, after 2-3 assignments, I also started reaching out to brands. I started selling myself honestly, because you know I yeah had that obviously background in that's sales. Yeah. yeah you have to reach out क्योंकि घर बैठे कहीं पे भी काम नहीं आता जैसे हमें घर बैठे बैठे नौकरी नहीं मिलती है तो वैसे ही किसी भी इंडस्ट्री में कहीं पर भी जाना है तो अब जैसे मुझसे लोग पूछते हैं आप पॉडकास्ट भी करते हो क्लासेस भी लेते हो और ऑफिस भी जाते हो हाउ डू यू डू दैट इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर टाइम एंड आई रीच आउट टू पीपल आपको लोग कैसे मिलते हैं मैं उनके प्रोफाइल्स पे जाती हूँ आई रीच आउट टू देम कुछ हाँ करते हैं कुछ मना करते हैं पर आप 10 लोगों से बात करोगे तो 4 आने को भी राज़ी होंगे बट आप ये सोचो कि आप कोशिश ही नहीं करोगे कि मेरा फ़ोन कोई उठाएगा नहीं एंड यू डोंट मेक दैट फर्स्ट कॉल तो कभी कुछ होगा भी नहीं तो मेरी फर्स्ट केस भी नहीं आती अगर मैं वो फ़ोन पिकअप नहीं करती तो इट्स इंपॉर्टेंट टू पिकअप दैट फ़ोन एंड मेक दोज कॉल्स एंड मीट पीपल वो ही जो हिंदी में कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है ये बहुत सही चीज़ है और ये सिर्फ इस इंडस्ट्री के लिए नहीं है आप कोई भी काम कर रहे हैं आई थिंक शबर डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो कहीं पे भी इंसान को लेके जा सकती है उसके लिए Absolutely. कंसिस्टेंट होना हम लोग सोशल मीडिया पे भी सोचते हैं कि अरे लोग एक रात में इनकी रील वायरल हो गई या दे गॉट फेमस ऐसा नहीं होता they've been working consistently for 1 year 2 year 3 years they've been putting content every day तब जाके कोई एक रील 2 रील्स होती हैं और फिर लोग उनको पहचानना शुरू करते हैं सो कंसिस्टेंसी वेदर इट्स सोशल मीडिया वेदर इट्स फैशन or any other thing that you're doing in life that's really important. Yeah, and I think apart from what you mentioned, it is very important for an individual, be it a man or a woman, to be absolutely humble. When I say absolutely humble, you should not have that ego and attitude or arrogance for that matter. कि अरे मैं brand को क्यों पूछूं? You know, it's always good to ask for work. You're not cheating, right? Not you're doing anything which is illegal, correct? So yeah, reach out to people. It's like, you know, you knock 10 doors and 6 out of 10 open for you. So if you get an opportunity and if you get work, why not? So that's how I started approaching brands, and after knocking so many doors, obviously I was lucky and few doors opened up. I call myself lucky, sorry if I'm using that word again and again, but I deeply believe in fate, especially in my life. So yes, the doors opened, and just like that, I'm completing almost 7 years in the fashion industry right now. And just to add on, now I've completed 60 plus brands across India. 60 प्लस बिल्कुल सही शबर मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ जो आपने बोला कि काम मांगने से कभी शर्माना चाहिए मुझे अचानक से याद आया कुछ दिन पहले रील्स में सिकंदर खेर जी का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी सन ऑफ अनुपम खेर एंड ही सेड कि आई हैव सीन माय फादर टिल डेट या अनिल कपूर साहब हैं वो कभी भी किसी नए डायरेक्टर से भी मिलते हैं प्रोड्यूसर से मिलते हैं वो काम मांगने में शर्माते नहीं हैं वो इस उम्र में भी काम मांगने में हिचकिचाते नहीं हैं और मेरे ख्याल से एक वो ऐसा ही इंसान कर सकता है जो बहुत हम्बल हो तो वो हम्बलनेस होनी बहुत ज़रूरी है जो मैंने वहाँ पर भी पेचेंट में भी देखा इफ़ आई सी हरदीप ऑल्सो तो मैंने उनको गुरुजी अब बोलना शुरू किया बस आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स ही इज़ नॉट ओनली a good taskmaster he's not only a plus size model maker बट वो यहाँ तक पहुँच पाए हैं 7 सीज़न तक पहुँच पाए हैं इसीलिए क्योंकि वो बहुत हम्बल हैं वो अपने हर एक मॉडल को बहुत इक्वली ट्रीट करते हैं और बहुत रिस्पेक्ट से सबके साथ बात करते हैं तो वो ही चीज़ मैंने देखी कि जितने भी लोग हैं लोग कहते हैं कि अरे ये ना सब नाटक करते हैं ये जितने भी एक्टर्स हैं या कुछ है पर ऐसा नहीं है
कहीं तक पहुंचने के लिए वो ह्यूमिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है, तो उसको ज़रूर बरकरार रखिएगा। बात कर रहे थे अभी हम ऑफ कैमरा भी डोंगरी की, कि डोंगरी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानती क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, बट मुंबई में दो तीन जगहें हैं जिनका हम नाम ज़्यादा सुनते हैं। तो टेल मी समथिंग अबाउट इट, क्या वहाँ पर और लोग हैं जिन्होंने बिकम सो सक्सेसफुल, या वहाँ से आके लोग आगे आए हैं? So there are quite a few people. I think Munawar Faruqi is one of the classic example, right? He's ओके। doing phenomenal. The entire India knows him. He's known, I think, worldwide also. या And I would like to take this opportunity and clear a few misconceptions about Dongri because श्योर। a lot of people through I think movies or documentaries and things like that, they've only heard everything negative about Dongri. All right. For example, mafia, Don, things like that. Having said that, if you look at Dongri now and if you meet the people there, they're all very educated people. Times are changing. There are people who are pursuing doctorates. There are people who are pursuing fashion. There are people who are pursuing influencing. We have a lot of people who are into engineering. So day by day, as years are passing, people are getting more focused into education, and they are doing phenomenal in their lives. And obviously, they are representing their, if not anything, then at least their caste. And Dongri, let me tell you something. If you are stuck at 3 a.m. in the midnight, Dongri is the place where you will get help. You'll get food. You'll get people taking you to the hospital. All of that. So people are it's a beautiful. very community based, Yeah. there's a community feeling in there. और मेरे ख्याल से ये चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत सारे पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट ने बोला है, एजुकेशन एक बहुत पावरफुल टूल है। अगर हमें जनरेशन्स को बदलना है तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक पीपल नाउ दैट देव सीन की माफिया और उसमें नहीं है, अगर आगे लाइफ को परस्यू करना है तो ना अदर जनरेशंस, द नेक्स्ट जनरेशंस आर टेकिंग एजुकेशन सीरियसली, एंड Absolutely. दैट इज़ व्हाट इज़ चेंजिंग द फेस ऑफ द होल प्लेस। Absolutely, because what happens is, right, if you pursue education, you get a field, you make some money, and then obviously you meet a lot of people, your thought processes start changing, and obviously your entire lifestyle changes. Or people from Dongri, like somebody like me, I want to take and put in all the time and energy to change the perception about how Dongri is perceived across India. Because as I said, a lot of people still know it for a lot of other negative things. I'm grateful to a guy who's from our area, Munawar Faruqi, who's done something good in his life, and he's representing Dongri in a positive way on a national platform. So that's the whole thing that I want to do as well. Yeah, so bringing a fame to the place you come from and you have Absolutely. that connect to that place, that's really great. क्योंकि ये चीज़ होती है कि हम आगे जीवन में कहीं पे भी चले जाएं, पर जो एक घर है जहाँ से शुरुआत होती है, उसके लिए दिल में हमेशा एक बहुत खास जगह हमेशा रहती है। से I believe in my roots and I'm very very proud of the place where I come from, the people I live with, and no matter how successful I become, no matter how rich I become, trust me, I still want to be part of those people. I do not want to forget my roots. I want to be with my old friends. I'm a little old school, in all of that. I don't believe in leaving people, leaving society. And so is my dad and so was my grandfather. So I'm just very proud of where I come from and the community I belong to. So yeah. Great. So taking it forward, आप जैसे आई सी यू आर ऑल्सो अ फूड ब्लॉगर, आपको खाने का भी बहुत शौक है, वो तो लग ही रहा है देख के। नहीं, लेकिन आप एक्सरसाइज भी पूरा फोकस करते हो। सो मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करूँगी कि खाने का जो फूड ब्लॉगिंग का शौक है एंड फिटनेस को कैसे आप साथ में बैलेंस करके चलते हो। So, to be honest with you, fitness is a different thing. Okay, food blogging is a different thing. So, when you talk about fitness, your definition for fitness would be something different. My definition would be something different. His definition would be something different. So, I just want to clear one thing here. Bodybuilding is a different thing. A lot of people think fitness matlab bodybuilder, 6-pack abs, नहीं, all नहीं, of नहीं, that. नहीं. No. My definition of fitness is tomorrow if Shabbar wants to see how fit he is, I'll get my blood report tested, see how my cholesterol levels are, all of that. If the reports are positive, good. Then I'll do. I believe in doing three days in a week weight training, 3 days in a week cardio. Two of these exercises are very essential. Weight training because the more older you grow, your body needs more strength. That's one. You need cardio because it supports your heart health. So that's second. And I want to give in a suggestion to people who are overweight like me. Please do not run on treadmills. You guys are only ruining your knees. It is very harmful for your knees. A lot of trainers, they promote, treadmill pe bhago. All of that. No. When you do cardio, make sure that you do either swimming or boxing, something that does not hurt your knees. And there are special running shoes if at all you're using.
If at all you're running, you must use those shoes so that you don't harm your knees. So that's one thing. And lift a lot of weights and eat good food. Yeah, I mean that's fitness for me in a थैंक यू nutshell. फॉर सो मैनी टिप्स क्योंकि देयर थिंग्स जैसे आपने बोला फिटनेस सबके लिए अलग है. अब जैसे मेरे लिए अगर आप सिंपल से उसमें पूछोगे कि अगर तुम्हारे लिए फिटनेस क्या है, मैं बोलूँगी मैं आराम से चौंकड़ी मार के नीचे बैठ सकूँ, वो मेरे लिए फिटनेस है. उस दिन मैं बिल्कुल फिट हूँ बिकॉज बीइंग अ प्लस साइज यू गेट चैलेंज इन फ्यू थिंग्स. सो फॉर मी इट्स अबाउट हैविंग अ हेल्दी बॉडी. जैसे आपने बोला कि लाइक my mom is a cancer survivor, so she makes sure that we get our blood test done every 6 months. तो जब वो blood reports ठीक आती हैं तो you're healthy. और अगर कहीं पे कुछ है तो आपको पता है कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, आपको एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है. तो दैट परसेप्शन कुड बी. तो हम उस परसेप्शन को वो करें कि ये नहीं है कि आप सिर्फ वेट लॉस के लिए क्योंकि हमारे दिमाग में जिम सुनते ही कि वेट लॉस या वो दैट फिजिक दैट यू टॉक्ड अबाउट द सिक्स पैक, वो नहीं है. इट्स ऑल अबाउट कीपिंग योर बॉडी हेल्दी एंड फिट, कीपिंग इट इन अ रनिंग शेप, कि आपको Exactly. किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ रही उठने बैठने के लिए, चलने फिरने के लिए. वो एक हेल्दी बॉडी है. आप किसी भी एज में हैं, आप अपना ख्याल रख सकते हैं, तो वो बहुत आप हेल्दी हैं उस हिसाब से. Yeah, and whenever I visit gym, Gagan, there are teenagers who are taking steroids, they're taking PDs and things like that, and they think that they're into fitness. Obviously, they're influenced and inspired by those bodybuilders. So they must understand. They have to make their life goal very clear whether they want to get into bodybuilding. Because if you want to get into bodybuilding, obviously the roadmap for that is absolutely different. And people who are professional bodybuilders, they know what are the pros and cons of of bodybuilding. As a Yeah, I concept. know, yeah. But for aam admi, like people like us, we should, I think, in a nutshell, you should just eat good amount of protein, little carbs, treat your घर body. का खाना जो घर का खाना जो types. हमारा देसी हिंदुस्तानी खाना हाँ. है, जो हम लोग एक्चुअली प्रॉब्लम ज़्यादा लाइफस्टाइल की है क्योंकि हम लोग ज़्यादा पिज़्ज़ाज बर्गर्स और बाहर हमारी आउटसाइड ईटिंग बहुत बढ़ गई. लाइक जो 55 में मेरे को याद है कि बाहर जाना सिर्फ जब किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी है. अब तो जब तक हफ्ते में एक बार अगर आपने बाहर का खाना नहीं खाया तो मतलब कुछ हो गया है. Absolutely. तो वो एक कंसेप्ट जो बदलता जा रहा है और उसी के साथ साथ हमारा बॉडी भी इसलिए इतनी सारी ओबेसिटी, इतनी बीमारियाँ या और चीज़ें भी आ रही हैं. सो इट्स मोर अबाउट योर लाइफस्टाइल. एंड लेट्स टॉक अबाउट फूड ब्लॉगिंग क्योंकि आपको भी खाना पसंद है, मुझे भी खाना पसंद है. So that started because I'm a hotelier, right, by profession, and in hotels I've worked in F&B for almost 10 years, which is Okay. food and beverage. So when you talk about world cuisines, I know about it. I know taste, I know flavors, and all of that. And after I left hotels, I still wanted to be in touch with that industry. So I thought, why not food blogging? Yeah, who better than a director of food and beverage can do food blogging, right? Yeah, you Because- can do justice to that Yeah. role क्योंकि आपको पता है कि क्या चीज़ है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है या क्या चीज़ है, तो आपने वो अपनी Exactly. नॉलेज को वैसे. Exactly. So I thought, I should do this because, it can complement my expertise. At the same time, I'll not miss hotels because hotel has always been my first love. Seriously. I mean, I owe a lot to that industry and I still wanted to keep in touch with that industry somehow. So that's how I started food blogging and I have blogged for a lot of restaurants in Mumbai. So that's good, but that's again, it's something which I do whenever On I and get off. free time. Yeah. On I mean, and off. I'm It's not much your into that. not your main bread and butter. Your main thing is Yeah. breaking the norms and becoming a fashion model. Yes, breaking And- stereotypes. Yeah, breaking the stereotypes and telling the world that dreams do not have a size. That's what's going to be today's episode's name because that's what Shabbar has shown us, that you could be any shape, size, you can dream big and just start believing in yourself, start working towards it, and sky's the limit. You can Absolutely. just go ahead and achieve whatever you want. Alright, Shabbar. श्योर बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके. हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी. Thank you. लेकिन एक चीज़ जो आई थिंक हम सबकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, जो मेरी लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ मैं अगर ये सब इतना कुछ कर पा रही हूँ, 3 चीज़ें अलग अलग, तो दैट्स बिकॉज ऑफ माई फैमिली सपोर्ट और हैविंग वेरी सपोर्टिव फ्रेंड्स. Who you will give credit, who are the people who always stood by your side. क्योंकि कोई भी इंसान कहीं पे भी पहुंचता है किसी भी मुकाम तक तो वो अकेला नहीं पहुंचता, उसके पीछे बहुत लोग होते हैं जो लोगों को नज़र नहीं आते. लाइमलाइट में तो एक इंसान रहता है. अब जैसे हम पॉडकास्ट करें तो पॉडकास्ट में लोगों को मैं दिखूंगी कि मेरे गेस्ट दिखेंगे, पर पीछे हमारे कैमरामैन हैं, पीछे हमारी लाइट्स हैं, पूरे स्टूडियो की टीम है. मेरे घर पे मेरी मॉम है हु सपोर्ट्स मी, माई सन इज़ देयर हु ऑलवेज कम्स, जो मेरे को हर पॉडकास्ट में ही इज़ ऑलवेज देयर. Yeah. तो ही इज़ माई लकी चार्म, वो हमेशा इट मेक्स थिंग्स सॉर्टेड फॉर मी.
So who are your people? So, on a serious note, I have a few people in my life. And I'm glad that you asked me this question because I always wanted to give them the credit for making me the person that I am today. So, I like to start with my grandfather. I call him Dada Abba. Unfortunately, he's passed away. Okay. And my grandmom. My Dada Abba was somebody who taught me fitness since I was, I think, 10 years old. Okay. वो मुझे मेरे बचपन में पुशअप्स करवाते थे. All And I right. think, and to be honest with you, Gagan, I do not smoke, I do not drink, I do not do any of the nasha, as people say. And I give my true credit to my Dada Abba and my dad because these guys, they inculcated those values in me and my other cousins. So my Dada Abba, my Dadi, my dad, my mom, my two siblings. So I have a younger brother and a younger Okay. sister. Obviously my wife and my mom. आई ऑल्सो सी कभी कभी आपके छोटे साहबजादों को भी हमने देखा, साहबजादे को हमने देखा है आपके साथ. Yes. तो उन्हें भी मॉडलिंग का चस्का आपने लगाया है. हाँ. सो व्हाट्स हिज नेम एंड So I've got two children. The elder one is Mohammed Moin Madhiya. Okay. The younger one is Ali Abbas Madhiya. Mohammed Moin, luckily, is a model now, and I got his portfolio done, obviously. And then, just like how I gave you guys some tips of how to initiate things, so we circulated amongst all the agencies in Mumbai, and we got some work, and he's doing what he's doing. I put him into boxing as well because I also wanted to do the same thing what my grandfather and my dad did for me. Okay, sorry, I missed out on that guy, my elder Chachu. ऑलराइट. He's the guy who's like my best friend. मतलब रिश्ते में तो चाचा है लेकिन है मेरे भाई जैसा. We are like partner in crime. When I say partner in crime, I जो can सारी do मस्ती. whatever he tells me and he can do whatever I tell him. If I want to go out for a war, he's the guy. And if he wants to go out on a war, I think I'm the one with him. And he's my chachu. His name is Ali Madhiya and he's very, very close to me. He's been bearing me since I was a child. So, yeah, after I named so many people. पंगा पैच है तो he is the first person Oh, to exactly. call. Exactly. लेकिन कैसा है ना, the रिश्ता is so special. I'll tell you because he's my dad's youngest brother. लेकिन for me, he's my elder brother because I am 30 and he's 38. You don't have that age Yeah, gap. and we are friends. Like we are friends, as in we do not have that chacha bhatija relationship. We do whatever we want to do, and literally partner in crime. So he's also bared me a lot. He's also hotel management graduate. So obviously. He taught me a lot of things. He was always a good friend of mine, and he still is. He taught me a lot of things. He taught me on fitness, and we share a great bond. So, yeah, life wouldn't have been the same without him also, along with the other people whom I named. Yeah. So, क्योंकि कहते हैं ना कि आप चलते जाओ काफिला बनता जाता है, लेकिन उस अकेले चलने के पीछे भी पहले ऑलरेडी एक काफिला होता है ही है, जो हमें धक्का मारता है कि तुम्हें है, तुम चलो, हम खड़े हैं यहाँ पर. So it's always a blessing to have these people in our lives, and I could see that spark in your eyes when you were talking about your people, and that's one reason. Well, I always talk about who are the people who always support us, क्योंकि उनकी support के बिना हम लोग कहीं पर भी नहीं पहुंच पाते. तो खुद पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ परिवार का साथ भी बहुत ज़रूरी है. बहुत ही ज़रूरी है. आज शबर, you are a successful plus size model. मेरा आपसे एक सवाल था. अब I'm a 4XL और 5XL डिपेंडिंग अपॉन ब्रांड टू ब्रांड, लेकिन मैं जब भी किसी भी ई कॉमर्स पोर्टल पे जाती हूँ तो मुझे कोई भी मॉडल्स मैक्सिमम XXL या XXL दिखती हैं. उससे ऊपर साइज़ पे वो ड्रेस कैसी लगेगी वो मैं नहीं देख पाती हूँ. मतलब इस द इंडस्ट्री जस्ट सेइंग बॉडी पॉजिटिविटी एंड दे स्टिल हेजिडेंट कि हम बस इस साइज़ तक ही दिखाएंगे, इसके बाद नहीं दिखा सकते. So you are an insider. What is your take on it? So I want to share a fact with all of you. I'm sure most of the people may not like it, but I just want to say the reality. So body positivity is one subject, I would say. It's very different from fashion modeling and glamour. Okay. Though body positivity is part of plus size modeling, but when you talk about brands having or putting their clothes on 4XL or 5XL model, we have to understand a lot of brands, they have their own ideology, right? I think very few brands, they want to put their clothes on a 5XL or 6XL model. But again, they don't want to show inclusivity. They just want to attract a customer who's a 5XL or a 6XL. So their marketing gimmicks work absolutely differently. And we as plus size models or body positivity influencers, we must not think that, okay, if I have a belly, I can become a plus size model. No, you cannot. They are promoting glamour, right? Okay. It is all about, looking beautiful, however you're looking beautiful.
because they still have that definition of beauty which used to be there ever since, right? So people have not forgotten what beauty looks like. Unfortunately, these days, a lot of people think, "Arey, plus size modeling, मतलब ठीक है, आपके पास बड़ी toned हो and you become a plus size model." No, that's not the case. They want you to look equally confident. They want you to have how you carry certain qualities. yourself. Yeah, How you carry yourself. absolutely. First thing, if I want to, suppose tomorrow if I open my own brand, right, I would want a model who looks good, irrespective of the size, correct? I don't mind hiring a 6XL model, provided, that model looks absolutely. They know how to carry that Yeah, dress. they are Like they're bold. wearing a very glamorous dress, but then they don't know how to carry it. So obviously the purpose of selling the dress fails. Exactly. They should look confident. They should look beautiful. They should look. I would say they should have that boldness within them. Only then a brand would want to hire you. And as I said, a lot of brands, they're running their businesses, right? There's no charity exactly. happening. At the end of the day, or what they want is they want to make money for themselves, and they all have different ideologies, different concepts. And trust me, I won't blame brands. A lot of our people, from the plus size industry or community, I would say, they blame the brands for not hiring them. But I think you should take this as a feedback. You should also work on yourself, right? They literally want people to look good, honestly. I mean, if you think that you have a tone and you want to become a model, sorry, you cannot. ऐसे तो हमारे हिंदुस्तान में कितने लोग हैं जिनकी कमर 40 से ऊपर है, तो सबको मॉडल बना सकते नहीं बना सकते. They want it's people call it plus मॉडलिंग का भी size. देखो यही चीज़ है कि चाहे मॉडलिंग है चाहे पब्लिक स्पीकिंग है, कैमरा को फेस करना भी एक आर्ट है. Absolutely. जो मैंने अभी जो बताया कि मैंने प्लस साइज पेजेंट में पार्टिसिपेट किया, एक इंसान को खूबसूरत लगने के लिए, एक मॉडल को, आपका मेकअप पर्सन, योर हेयर पर्सन, द पर्सन हु इज पुटिंग इन अ ड्रेस ऑन यू, हाउ यू आर कैरिंग एवरीथिंग, ये सब जब जाके मिलता है तब उस कैमरा में वो जादू आता है. तो अगर आपके अंदर वो ज़ील नहीं है ये सब करने की, और आपको कि हाँ यार ठीक है, जो आपने बोला, तो हमारे यहाँ पे तो टोन मोस्टली, अगर हम बात करें लड़कों की, तो 30 में, इफ दे यू डू नॉट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, तो 25-40 मोस्ट पीपल हैव दैट बेली. तो अगेन मॉडल बनने के भी कुछ क्राइटेरियाज हैं कि आप अपने आप को कैरी कैसे करते हो. योर पोस्चर, the way you meet a person, that glamour is not about the clothes, it actually comes from within, the way you portray it. आपकी आईज में क्या चमक आती है, वो सब आपकी इंटरनल बॉडी लैंग्वेज से निकल के आता है. वो किसी कपड़े से नहीं आता. कपड़ा आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस दे सकता है, लेकिन आप उसको कितनी ग्रेस से पहन रहे हो वो आपके ऊपर है. So I get that point. Yeah, and a lot of our plus size influencers, no, Gagan, like if you compare, I'm not comparing here, but just to give a sense of both the industries. If you look at international plus size modeling markets, and if you look at the models there, they are 5XL. But just look at their bodies. They've worked on themselves. They have assets. All right. When I say assets, they have worked so much on their body that even if they're huge, they look absolutely gorgeous. In India, unfortunately, just because, people don't want to work on themselves. It's good to be big, but you should be proportionate. And that can only come when you take care of yourself. Yes. You take care of your body. Correct. You just cannot have, I'm sorry, but I don't want to say this in a negative way, but you cannot have your belly touching your knees. And then you call yourself a plus size model, or you want to become a plus size model. Right? As a male model, we all work on measurements, correct? So just to give you an idea, my chest size is 48. I fit in a 3XL. You look at other male models of 3XL, they look visually more fatter than me. I look visually more toned than them. Yeah, I mean, if I look at your Instagram, we have to for a second say, acha, ye plus size. Then you scroll, acha, now he's. Similarly, if you just like, there are few pictures where you're just showing your face, and I think just the upper part is this. Usme koi nahi keh sakta that he's a plus size model. Correct. So again, the charm of your face, use that. And it is, let's not name it plus size. It is big fashion, people, it's about big and tall. Correct. Like it's for huge people. Internationally, if you look at people from UK, US, they are tall people, broad people. So even if they are tall and broad and they work out, so when they put on more muscles and lose a little bit of fat, that's how they get toned. You automatically get that glamour and that aura. And our Indian people, we should know कि भाई gym जाना बहुत ज़रूरी है, because unless until you hit the gym, you won't build on muscles, you won't lose fats, or you won't tone down. And it is very important for a plus size model to work out. Let me mind you, because recently I did a shoot which was just for the underwear.
Yeah, I think that was also a Yeah. controversy because obviously, I love the caption. You have not hit a fashion industry till such time you haven't done an underwear. Exactly. So I love that caption. But again, the grace you do it with, the confidence and grace. It's not about कि मतलब प्लस साइज को हम अब पीरियड में अगर हम मोटा बोल देंगे तो बॉडी शेमिंग हो हाँ. जाएगी. लेकिन फिर भी आप किस तरीके से खुद को कैरी कर रहे हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट है. इवन इफ यू आर डूइंग अंडरवेयर एड, यू आर मोर फोकस्ड ऑन हाउ यू लुकिंग एट द कैमरा, हाउ योर बॉडी इज. Correct. So it's not looking vulgar. It Absolutely. has come out really gracefully. So I've seen those photographs and they look fab. They look up photos of a confident man. And I'm still Showing- 4XL in Yeah. that, measurement wise, because modeling is all about measurements, right? They make clothes as per your size. So if I'm 4XL and if I manage to look like that, and I think that is what plus size modeling is all about. And, people have to be positive, all right? Somebody like me, suppose tomorrow if I become 6XL for some reason, all right, I should not sulk, crib, cry. I should embrace myself. When I say embrace myself, I shouldn't be telling people or seeking validation, outside. I should know, okay, yes, I'm 6XL. Maybe my body is not in great shape. You should accept the fact, okay? Let's not hide away. Let's not run away from facts. You should know what you are. So as long as Shabbar knows that he's 6XL and he needs to work out on his body and get into a particular size, in a positive get back way. to the modeling. Yeah, I should know how I want to look. I should know the roadmap to my modeling. So again, this is something which I'm telling for people who are 4XL, 5XL and want to get into plus size modeling. My suggestion is get yourself to at least 4XL, because 3XL and 4XL you get more work. Let me be very honest, because most of the brands, they make clothing for Max 3XL and 4XL, at least for max. shoot purposes, right? But so yeah, get yourself 4XL and work out. The idea is to look big. Again, the idea is to look big. You can look big when you have muscles, you can look big when you have fats. But imagine a body which does not have muscles but only have fats. You look flabby. The clothes won't look good on you. The brands obviously won't want to hire you. This is the Okay, this is bitter part of it. बिटर पार्ट ऑफ इट. लेकिन ये मेरे ख्याल से इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम सिर्फ प्लस साइज मॉडलिंग की बात करते हैं, हम फैक्ट्स की बात नहीं करते. तो मैं बहुत खुश हूँ शबर, आपने यहाँ बहुत सारी मिथ्स और तोड़ी हैं और फैक्ट्स की बात करी हैं. तो जो अगर प्लस साइज मॉडलिंग करना चाहते हैं, बी इट मैन और वुमेन, if you're really looking out for coming into this industry, Shabbar has put in a roadmap for what is that you need to do. What other tips you would like to give? जैसे आपने बताया कि आपने तो खुद रीच आउट करा and you got an opportunity. I think you manifested it so hard that God gave you your almond and you got it. लेकिन और लोगों के लिए कैसे करेंगे जिनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी जैसे नहीं आई, तो उनको कैसे वो अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट करें? So first of all, get yourself a portfolio, because that acts like a resume for yourself. Once you have your portfolio, you should ensure that you have your portfolios in minimum 4 categories of clothing. That could be ethnic, casual, whatever you decide. Have those circulated amongst the brand. Reach out to agencies. Tell them that I'm XYZ and I want to pursue modeling, and give them your details, your body measurements, your portfolio, and you can do either you can become a freelancer model, or you can join the agency. If you join the agency, you get more work. If you are a freelancer, you won't get work. Okay. But let me tell you, the reason I'm emphasizing on this is because this is also a myth. I am a freelancer model. I am not associated with any agency. But I managed to work with a lot of brands. So it's about how you want to drive yourself, how you want to market yourself. I always wanted to explore work by my own self, because when you get into an agency, there are drawbacks. They don't let you work get with a lot of contracts. brands. You get binded by the Correct. contracts. You get binded by the contracts, but it is up to you, right? It's about your own marketing technique. If you're not getting work, it's always good to get into an agency. But if you think that the market wants you, then explore, be a freelancer, and you'll have fun. So yeah, get the portfolio, meet people, like roll it up amongst the agencies and the agents. So that's second. And reach out to brands on their Instagram, and you can start off with the Instagram influencing, because that's the platform, and that's where most people are doing things that's right where it's now. like a stepping stone for most of the people. You create a reel and all of that. So once you start with fashion influencing, getting into fashion modeling becomes very easy. And obviously you can follow Lakme Fashion Week. They keep taking auditions time and again for plus size models. All right. So but once again, मोटे हो तो ज़रूरी नहीं है प्लस साइज मॉडल बन जाओगे. प्लस साइज मॉडल के लिए अलग सा क्राइटेरिया होता है और आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है.
आई थिंक सिर्फ प्लस साइज के लिए नहीं शबर, बहुत से पतले लोग भी हैं क्या, लेकिन सब मॉडलिंग कर सकते हैं। एग्जैक्टली, देखो वैसे ही है गगन। मॉडलिंग मेरे ख्याल से चाहे प्लस साइज है चाहे पतले लोग हैं, मॉडलिंग का अपना एक क्राइटेरिया है। कोई भी इंसान, मतलब हम लोग भी जैसे हर हम लोग नॉर्मल सब सब कपड़े पहनते हैं, लेकिन वही शर्ट कोई कितने कॉन्फिडेंस से पहन के आता है, ऑफिस आता है, आपको पता लगता है यार इसने कुछ नया पहना है। एंड समबडी हु इज लाइक दे इवन इफ दे वॉन अ न्यू शर्ट बट वो अपने जोन में है, यू वोंट इवन गेट टू नो। तो अगेन हाउ यू आर कैरिंग, इवन कैरी योर सेल्फ ऑन डे टू डे बेसिस, वहाँ से आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरे अंदर कुछ तो स्पार्क है कि चलो ट्राई करना चाहिए। तो वी टॉक्ड अबाउट वेरियस थिंग्स शबार, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत डाइवर्स थैंक यू, चीज़ों इट्स अ के बारे में प्लेजर। बात कर रहे हैं, फिटनेस से लेके प्लस साइज मॉडलिंग, फूड व्लॉगिंग, योर होटलिंग एक्सपीरियंस, हाउ यू गॉट इनटू इट। अगर हम बात करें एक चीज़ और आपके दिल के बहुत करीब है, जिसके बारे में जब हम इंस्टाग्राम पे बात करते हैं या इंटरव्यू से पहले बात कर रहे थे, यू आर डिस्टर्ब बाय हाउ थिंग्स आर राइट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया मानी जाती है, और लेकिन आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा सेकुलरिज्म जो है वो हम शायद उसको भूलते जा रहे हैं। Absolutely, Gagan, and I think that's the sad part. I'm a very patriotic Indian, but when I look at things, obviously, when I look at things on social media, what's happening across the nation, a lot of people are fighting over religion, a lot of people are fighting over caste and creed and all of that. And I think that's very sad. We all have heard about one line, mazhab nahi sikhata, आपस में आपस में बैर बैर रखना, करना, हिंदी हिंदी है है हम, वतन है ये गुलसिता हिंदुस्तान हमारा. हमारा। Correct? I've got goosebumps. Look at Yeah. it. And I'll tell you something, Gagan, all of this is occurring. I'll tell you once again, it's because of lack of education. It's because of illiteracy of Indians. Because once you study, obviously, you become part of that cosmopolitan society. Then when you work, you become part of the cosmopolitan society. Obviously, you'll not have hatred. Because all of this somewhere is being spread through digital media. You are non-Muslim, I am a Muslim, and our photographer may be Christian, right? We all three of us together are working for our own bread and butter. We're all working together happily. We all are loving each other, right? So it means what? That on ground level, We can survive with each other. obviously, Yeah. as long as you keep your religion in your heart and mind, and I'm not telling you what to do, and you don't tell me what I'm supposed to do, and we don't tell him what he's supposed to do. We all will survive with harmony, joy, and peace. इस वही चीज़ Correct. है कि हम कहते हैं ना कि इंसानियत से ऊपर कोई धर्म नहीं, और मुझे नहीं लगता कोई भी धर्म या कोई भी रिलीजन कभी भी आप मतलब आपको हेट करना सिखाता है। नहीं सिखाता, absolutely. तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो आजकल आप देखते भी हैं या सुनते भी हैं, अपने आप को थोड़ा सा एजुकेट करिए और कोशिश करिए कि चीज़ों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो। अपने आसपास देखिए कि क्या, मतलब हम एक कम्युनिटी को टारगेट ना करें, एक ये ना कहें कि इस मतलब आई नो देयर सो मेनी पीपल से कि नहीं इस मज़हब के लोग ऐसे होते हैं, इस मज़हब के लोग ऐसे होते हैं, ये लोग सिर्फ ऐसे करते हैं। या एवरी कम्युनिटी इज़ डिफरेंट, एवरी कम्युनिटी हैज़ अ डिफरेंट कल्चर, बट इंडिया की खासियत ही तो ये है कि हर एक थोड़ी देर बाद हमारी बोली और भाषा बदलती है। हम अलग अलग प्रांतों से, इतनी भाषाएं, इतने रिलीजन, इतना कल्चर, हमारे से ज़्यादा रिच कोई कंट्री नहीं है व्हेन इट कम्स टू कल्चर। लेट्स सेलिब्रेट दैट, लेट्स सेलिब्रेट ईच अदर ऑन दैट नोट ऑफ सेलिब्रेटिंग who we are all more than our exteriors। तो धर्म, जात पात, हमारा सोशल स्टेटस, ये भी एक सोसाइटियल एक्सटीरियर है जो हमें कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाता है कि अरे मैं उससे बड़ा हूँ या वो मुझसे छोटा है। तो एक दूसरे को मान सम्मान देते हुए, इक्वालिटी की बात करते हुए इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने की कोशिश करें, जो इस पॉडकास्ट का भी मकसद है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर, शब्बा खैर।